Hello dear students, myself CMA Padmaja Buzruk. I will continue the topic accounting for shares and debentures. Please refer module number 1.1 on shares. This video is all about some theory and illustrations on interest on calls in arrears and interest on calls in advance. We'll discuss one illustration on interest on calls in arrears and interest on calls in advance. First, let us see what is interest on calls in arrears. If permitted by articles of association, then directors may collect interest on calls in arrears from the shareholders. कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है अगर शेयर होल्डर्स को पैसा देना है और वो पैसा उसने नहीं दिया तो उसे कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की परमिशन हो तो डायरेक्टर्स कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं. In the absence of any specification in the articles of association, then company follows table F, according to which interest on calls in arrears is 10% per annum. जो इंटरेस्ट कंपनी कलेक्ट करेगी कॉल्स इन एरियर्स पे वो इंटरेस्ट रेट होगा एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरेस्ट विल बी कलेक्टेड बाय कंपनी. बट इफ no specific mention about percentage of interest is given in articles of association, then in that case company table F follow करती है as per Companies Act 2013, and according to table F interest on calls in arrears is 10% per annum. Interest is to be payable from the due date of payment of call up to actual date of payment of call. सो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करके पे करना है दैट इज जो ड्यू डेट है कॉल पे करने की उस डेट से जब पेमेंट एक्चुअल किया हो तब तक के पीरियड का इंटरेस्ट आता है. सो इंटरेस्ट इज पेएबल फ्रॉम ड्यू डेट दैट इज डेट ऑन विच कॉल वाज सपोज टू बी पेड एंड एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल. ऑन दोज डेज इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड इट विल बी कलेक्टेड बाय कंपनी. Now let us see interest on calls in arrears के journal entries. Journal entry to record interest due, shareholder account debit to interest on calls in arrears account. Journal entry to record interest received, bank account debit to shareholder. Journal entry to record or transfer interest to profit and loss, interest on calls in arrears account debit to profit and loss account. So ये जो इंटरेस्ट कलेक्ट करना है शेयर होल्डर से, ये जो इंटरेस्ट ड्यू है उसकी एंट्री आपको बनानी पड़ेगी. शेयर होल्डर से वसूल करना है. शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन arrears, and this interest company will collect. So it is company's gain. So it is to be credited to profit and loss account. So this interest on calls in arrears account gets closed by transferring it to profit and loss account. Interest on calls in arrears debit to profit and loss account. And when company collects the interest, bank account debit to shareholder. So shareholder account will also get closed. Now we'll see interest on calls in advance. कभी कभी जो शेयर होल्डर्स है वो एडवांस कॉल मनी पे करते हैं बिफोर कंपनी आस्क्स देम टू पे, एंड ऑन दैट आल्सो कंपनी पेज देम इंटरेस्ट. इफ परमिटेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देन डायरेक्टर्स मे पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू द शेयर होल्डर्स. In the absence of any specification in articles of association, then company follows table F, according to which interest on calls in advance is 12% per annum. Interest is to be payable from the date of receipt of call up to due date of payment of call. So अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में कॉल पे किया होगा तो उसे
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो रेट मेंशन किया होगा उस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया होगा तो टेबल एफ फॉलो करेंगे, उस पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट है 12% पर एनम एंड इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच calls in advance was received till that due date. Now let us see journal entries on interest on calls in advance. Journal entry to record interest due, interest on calls in advance debit to shareholder. Journal entry to record interest paid shareholder to bank. Journal entry to transfer the interest to profit and loss account debit to interest on calls in advance. नाउ कंपनी इज पेइंग दिस इंटरेस्ट, कंपनी पे कर रही है, कंपनी के बैंक अकाउंट में से जा रहा है, सो इट इज कंपनीज लॉस, सो इट इज टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसे मिल रहा है? शेयर होल्डर को मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। Now, interest on calls in advance account is closed by transferring it to profit and loss account. Profit and loss to interest on calls in advance. जब कंपनी पे करेगी बैंक को आएगा क्रेडिट, शेयर होल्डर अकाउंट is to be debited. That is how these journal entries are to be passed. Now we'll see one illustration. Illustration 7. B Limited issued 2000 shares of 100 each at a premium of 10%. Payable 20 on application, date of payment is 1st April. 40 on allotment including premium, date of payment is 1st of June. 30 on first call, date of payment is 1st July. 20 on second and final call, date of payment is 1st of August. Applications were received for 1800 shares and directors made allotment in full. 2000 शेयर्स का इशू निकाला है, 1800 एप्लीकेशंस मिल चुके हैं, सो दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सो 1800 शेयर्स का ही अलॉटमेंट किया है। वन शेयर होल्डर टू होम 40 शेयर्स वेर अलॉटेड पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग विथ अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर जिसे 40 शेयर्स अलॉट कर चुकी है कंपनी, उसने क्या किया? एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ ही उसने एंटायर बैलेंस पे किया है। सो अलॉटमेंट के साथ दैट पर्सन हु इज हैविंग 40 शेयर हैज पेड फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल कॉल। अनदर शेयर होल्डर did not pay allotment and first call money on his 60 shares but which he paid with final call. सो एक जो शेयर होल्डर था उसके पास 60 शेयर्स थे, he has not paid allotment when it was due on 1st June, he has not paid first call when it was due on 1st July, but both he paid with final call. Interest should be received at 5% per annum on calls in arrears and interest should be paid at 6% per annum on calls in advance as per articles of the company. Calculate the amount of interest paid and received on calls in advance and calls in arrears respectively on 1st August 2021. Now, what is given in question? One shareholder to whom 40 shares were allotted paid entire balance on his shareholding with allotment money. So, जिसे 40 shares allot कर चुकी है कंपनी, उसने allotment के साथ फर्स्ट कॉल मनी भी पे किया है, फाइनल कॉल मनी भी पे किया है on 40 shares. That means calls in advance is on 40 shares. First call money and final call money on 40 shares is received with allotment money. First call money received on 40 shares at the rate of 30 is 1240 into 30. First call was due on 1st July, but it was paid on 1st of June, that is 1 month in advance. So interest on first call paid in advance on
1200 at 6% for 1 month is rupees 6. Second call money was received on 40 shares at the rate of rupees 20. 40 into 20 is 800. Second call was due on 1st August, but he has paid it on 1st of June. So that means he has paid it in 2 months in advance. So interest on second call paid in advance on 800 at 6% for 2 months. सो उसे पे कब करना था 1 अगस्त को, उसने पे कब किया है 1 जून को, 2 महीने एडवांस पे किया है, 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा रुपीज़ 8. टोटल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 6 + 8 is equal to rupees 14. Another shareholder did not pay allotment and first call money on his 60 shares but which he paid with final call. सो एक शेयर होल्डर जिसके पास 60 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा फाइनल कॉल के साथ पे किया है. दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर्स इज ऑन 60 शेयर्स. Allotment money on 60 shares at rupees 40 was due on 1st of June but paid on 1st of August. जून पे ड्यू था 1 जून पे, लेकिन पे किया है 1 अगस्त को. So interest is to be calculated on 2460 multiplied by 40 at 5% for 2 months. 1 जून को देना था, दिया है 1 अगस्त को, 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा रुपीज़ 20. First call money on 60 shares at 30 was due on 1st July but paid on 1st August. Excuse me. On 60 shares at 30, so on 800 at 5% for 1 month. जुलाई में ड्यू था, अगस्त में पे किया है, 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा 7.5 रुपीज़, 7 रुपीज़ 50 पैसा. So total interest on calls arrears is 20 rupees plus 7.5 is equal to 27 rupees 50 paisa. That is how interest on calls arrears and calls in advance is to be calculated. Thank you.